प्रिपरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आपने पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। तो अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड मींस व्हाट? अनसैचुरेटेड C डबल बॉन्ड C, दिस इज अनसैचुरेटेड, and hydrocarbon H, this unsaturated hydrocarbon undergoes hydrogenation, right? On hydrogenation to form, क्या होगा? ये bond cleavage 1H this side, 1H this side, to form simply saturated alkane, that is ethane, right? In presence of it require catalyst, that is platinum or you can say nickel, right? Means this unsaturated, this is ethene is on hydrogenation to form ethane, right? That is said to be hydrogenation. unsaturated compound to saturated compound, that is preparation of alkane, right? Clear? Yes, sir. Write down. Second, that is Woods reaction. Woods reaction. Woods reaction, Woods scientist का नाम है, and the reaction is given by Woods, that is according to him, he said कि alkyl halide RX, that is alkyl halide react with, but alkyl halide how many? Two molecules of same alkyl halide, दो molecule of same, ये alkyl halide एक और alkyl halide RX react with sodium metal, ये भी alkyl halide, ये भी alkyl halide, same, right? Two molecule of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether. Dry ether का presence में reaction होगा and the reaction takes place to form two molecule of Na to form what? 2NaX plus R. This R, here bond cleavage takes place, RX, here bond cleavage takes place. So this R combined with this R. Because of R is what? Containing carbon, that is alkyl. So carbon linkage takes place due to catenation, right? That is said to be higher alkane. Here always in case of Woods reaction you will get always क्या? You will get even number of alkane. ये हमेशा प्रोडक्ट इवन नंबर ऑफ अल्केन ही देगा, राइट? सपोज दैट फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकन मिथाइल ब्रोमाइड, दिस मिथाइल ब्रोमाइड react with sodium metal, react with another molecule of same methyl bromide. Clear? Yes, sir. So this methyl bromide react with sodium metal again because of according to Woods two same molecule of alkyl halide, दो same molecule of alkyl halide react करेगा in presence of dry ether with sodium to form ये देखो ये NaBr, two molecule of NaBr, right? Here same reaction, that is in presence of dry ether to form, see, carbon, this carbon, catenation, that is CH3, this is ethane, that is 2NaBr. Why here it is given higher alkane? Higher alkane इसलिए कह रहा है कि if you are taken here alkyl, उस alkyl का twice हो जाएगा, that is the higher. If you are taken reactant as a react to carbon, that is ethane, product क्या होगा? Butane. Just double ना बेटा, one carbon that is methyl to ethane, propyl to hexane, 3 2 6.
वुड्स रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकन एज अ C3 कार्बन एज अ रिएक्टेड 3 कार्बन, so with Br rest valency fulfilled by hydrogen, so this is 1 bromo propane. This 1 bromo propane reacts with sodium metal with another same unit of 1 bromo propane, है ना? इन वुड सीरीज दोनों सेम, ये रहा 3 कार्बन with Br CH2 CH3 in presence of dry ether. This is the statement of Woods ना कि two same molecule of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether to form higher alkane. अब ये 3 कार्बन here 3 कार्बन here, so see राइट, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr रिमूव हुआ. अब चेन कहां है? ये कार्बन, ये रहा CH3, ये CH2 देन CH2, यहां पे बॉन्ड क्लीवेज. सिमिलरली हियर आल्सो बॉन्ड क्लीवेज फ्रॉम दिस कार्बन ना, तो ये कार्बन दिस कार्बन जॉइन विद दिस कार्बन, इससे नहीं जुड़े क्योंकि इसका वैलेंसी फुलफिल्ड है. सो हियर यू हैव CH2 CH2 CH3 plus 2 NaBr, that is hexane. N-hexane, normal chain of hexane, 6 carbon in a chain, double, yes or no? Yes. Fitting reaction. Fitting reaction, क्या है fitting reaction? Same. Here 2 molecule of aryl halide react with sodium metal in presence of dry ether to form biphenyl. 2 molecule of aryl halide, it is same as Woods reaction. वुड्स ने क्या किया था? उन्होंने एल्किल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड, और इन्होंने एरिल हैलाइड. एरिल मींस बेंजीन, अरील, ये बेंजीन है. दिस, अगर इस बेंजीन से, दिस इज बेंजीन, फ्रॉम दिस बेंजीन इफ आई एम रिमूविंग 1 H, एक H रिमूव कर दे, सो दैट इज सेड टू बी एरिल. दिस इज aryl, 1 H less from this, or C6H6 C6H5, this is aryl. So this aryl is used here. So here aryl halide benzene with X, aryl halide halogen react with sodium metal, again 2 molecule of aryl halide, reaction takes place in presence of dry ether to form 2 NaX is to be removed and the product is obtained benzene fused with, है ना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, ये यहां से, तो ये कार्बन दोनों जुड़ जाएगा. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दैट इज सेड टू बी बाइफेनाइल. 2 phenyl are fused together. Woods fitting reaction. Woods fitting reaction. Here, according to this Woods, alkyl halide react with sodium metal. According to fitting, aryl halide. Very good. In presence of dry ether to form that is alkyl, है ना,
alkyl substituted to benzene. Alkyl substituted benzene, right? Yes or no? Yes, sir. For example, methyl bromide, methyl chloride react with sodium metal with chlorobenzene in presence of dry ether to form 2NaCl plus this is Methyl very good beta methyl benzene, or this is the IUPAC naming. What about its common name? Common name is toluene. Methyl chloride and chlorobenzene to form toluene. Next है, that is from Grignard reagent. Grignard reagent means here alkyl halide react with magnesium metal. इस अल्किल हलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं किससे? मैग्नीशियम मेटल से. तो जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितना इसको फ्रीज करना पड़ेगा. सो यू हैव RMgX. दिस इज Grignard reagent, right? अब this Grignard reagent is RMgX is react with, इसको रिएक्ट करा दिया किससे? वाटर से. Grignard reagent react with water. तो सी Mg मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है? 2 प्लस. उस 2 प्लस में देखो बेटा ये एक माइनस है, राइट? तो ये प्लस ये माइनस, तो कौन इसके पास आएगा? Mg के पास माइनस मीन्स OH ना. तो ये Mg और ये RH प्लस ये हो जाएगा MgOHX. दिस इज अल्केन, है ना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है बेटा एल्केल मैग्नीशियम हलाइड. अल्किल मैग्नीशियम हलाइड इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसको अगर वाटर से रिएक्ट करा दो, यू हैव अल्केन, राइट? क्लियर?